Hello. 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 Okay. So shall we start? Sorry. So good evening all, distinguished CMAs, respected people, speaker, and the fellow professionals. It is with a great enthusiasm that I welcome you all for the today's CEP session hosted by our dynamic chapter, Pimprinchod chapter. The theme we are exploring today is the beyond number, CMA's role in driving performance excellence, which is more than a topic. It is a reality we live and lead each day. In the last week already we had conducted a seminar on the Tableau. So basically it's our we are not conducting the CEP, but our each seminar is conducted with the some purpose, and that seminar is linked with the current or previous program as well. So in the last week already we have seen how the data is helping you to make the decision. Now when we are coming some decision, correct, of course those numbers are playing some role. So that's why how those numbers are playing a role in our life, and how can we come up with a better decision. So in the last week we are coming with some decision, but how can we come up with the better decision? So to know those things, today we have a eminent speaker with us, Dr. CMA Ajay Paradikar sir. Now before going ahead for the next session, I would like to know how many of you are a fan of cricket? How many of you are a fan of cricket? How many of you like? Okay, you one. None of you? Okay. So have you heard what is the today's specialty of the cricket? If you have not heard, let me tell you that those things. After almost 28 years, South Africa won the World Test Championship. Okay. So that Test Championship has come to South Africa almost after 28 years. It means it is almost for 20 years, South Africa has not won a single ICC trophy. Now, how can that victory and our CEP is related? So basically, it's a match, correct? But it's not only a match, it was a victory, and it is a master class representation of the resilience, discipline, adaptability, and the timing. And what four things I just told you right now: resiliency, discipline, adaptability, and timing. Those four main important things are playing a role in our day-to-day profession. So when we are representing ourselves as a CMA, all these four pillars, these four qualities are representing over there. Recently, we 2 days before we got a very bad news about the crashing of the Air India plane. So for that almost 270 lives were lost in that unfortunate accident. So I will request all of you, let us stand up together for 2 minutes to give the tribute to all of them. Okay, thank you.
It was a very unfortunate incident which is happened few days, 2 days before. Now, as we return to our focus, we reminded our another major event of the just world witness about the winning of the trophy by the South Africa. Now, dear friends, now when we talk about all those things, our CMAs are is like a test cricketer. Now, how? We are no longer a backstage accountant. Okay, so now we are leading across all companies in a front foot. No, we are not the backstage accountant. We are a frontline thinkers. We are the analysts who see beyond the spreadsheet. So that's why we have arranged the today's session, and we are the strategists who transforms the data into the direction. Today's session invites us to look beyond the just talking about the numbers and telling about the numbers. Today we have met to understand the pulse of the business performance, just like a test match. Business success is built session by session. Business success cannot be built overnight or in a 1 year or 2 years. It is a legacy which creates. And who better than CMA read the pitch, balance the risk and the play the long game. We are the one who can do all these things. So today we are fortunate to have us with a CMA Ajay Parlikar sir, who is a seasoned professional and a thought leader in a performance transformation. His experience will show us how CMA can become the difference maker in a boardrooms and the shop floors as well. As we dive into the today's session, let us carry forward a message of the balance between the excellence and the empathy, between the growth and the grounding. Because if the WTC brought us how grit leads to the glory, Air India tragedy reminds us how remain human, grounded and grateful. So let us, this is not just the learning session, but a moment of reflection on how we as a CMA can shape the performance with a purpose. Thank you and welcome you once again. With this, I will request our senior most member, CMA Ladda sir, to felicitate today's speaker, CMA Ajay Parlikar sir. Guys, can we have a round of applause? Okay. Now I'll request Chairman CMA Ajit Shinde and Vice Chairman CMA Balkrishna Hazare to give a sapling to Ajay sir. So now, without wasting a single minute, I'll request sir, now the stage is yours and you can start with our today's topic. Thank you.
Fine. So, everybody, thank you very much to the PCMC chapter for giving me an opportunity to speak with you, have a word with you. And it's not that I have very much great experience and great contribution I can make over here as a practicing cost accountant. We are all equal, actually. And so, with some things are there where I can say something. Okay. So, practically speaking, generally what I find over here or in our profession, that we are also somewhat part of some compliance. Okay. So, really the profession, I think this profession is not made for this compliance things or something like that. We are expert in everywhere, we are expert everywhere, and that is why we are expert in compliance also. And so we are doing that right now. Okay, some people are doing, some people are, everybody may not get an opportunity to be a management accountant or something like that. But our goal should be to be management accountant, and not because I really feel that we have a core competence in management accountancy. Our institute, our syllabus, our experience is designed in such a way that we are more management accountant than accountant and then compliance. That is what I really feel. And so this is one of the aspects that we can say, that which can help really in our career or in this where we might have not done this particular activity. That is what the topic was suggested by Ajit sir, that we should do this kind of program like this. Okay. So let us go through this beyond numbers. Of course, CMAs always should look beyond numbers. That is what I am of the opinion of that. Okay. Whether you are in employment or you are in practicing, you are in practice or something, sometimes somewhere you need to go for compliance because you have to get your bread and butter also. It's not that I disrespect the compliance things, but the things are that we should go beyond compliance, we should attempt to go beyond compliance. And this is one of the tools that we can really contribute in as a CMA. Whether we are in practice or we are in employment, we really can contribute in this particular area, right? Okay. So let us go touch to the topic that performance management system, performance measurement system, right? Many a times it happens, Marathi English mix is okay for this audience also. Okay, fine. And many a times it happen ki people say that I work hard for the full day, I am contributing a lot to the organization, but I am not getting enough returns because my efforts, these things are not recognized, are not coming on the paper. It so happens. Many a times it may so happen that people are smart in working, but they are not enough smart in presenting what they have done. People are not enough smart that even if they are good in presenting, they cannot make a value of it, so that it so happen that we contribute a lot, but in the rewards, in terms of rewards, we don't get enough. That is what we may feel. It may happen. Okay. So this is harmful to the management, to the organization, and to the employee, all the people involved in this.
okay, in this all this process, okay, all this process of running the business, okay, it is harmful everybody, है ना, because this is not a win-win situation, right, है ना, so win-win-win, this situation is lose-lose-lose, okay, so it turns into lose-lose situation, and so this deal is not that become effective. So what should be the answer to this? That performance evaluation should be measurable. How we can measure this performance, and really one can at least, not entirely we can do that. We cannot address everything. Everything is not measurable, but at least some 70%, 80% part of it one can measure, that my efforts are demonstrating something, that I have improved some system, and so the results are there. Okay, so this kind of thing we really can measure. Some things are measurable, some things are beyond measurable. Those are really not measurable. See, one can say, what is contribution of Narayan Murthy in Infosys? And we really cannot measure it, na? Right? Okay. But there are some things, there are some people, there are staff like that we can measure their performance to some extent, not to the entirety. That is, we should understand first, this is the limitation of this performance measurement system. Performance can be measured to some extent, not everything, right? Not everything can be measured. Okay. Then systematic process to plan, monitor and evaluate performance. हम लोग जैसे बजट करते हैं, बजट अपन बनवतो म्हणजे काय बनवतो? We do plan, we do a plan, business plan. It is a business plan. This is how I will achieve the sale. This is how I will achieve the cost, and this is what is the profit. And then the entire year we run after this budget, and to put everything into this control. This is what? A control mechanism. Budgetary control we call it as a budgetary control. The similar thing, same thing we can see Excel में अपन वापरता सो तो control C, control V. Okay, control V के लिए और formula references change होना रहे. Okay, with changed references, this budget versus actual means this controlling tool can be applied to the performance itself. So how the controlling tool? So prepare budget. Prepare budget means what? Prepare systematic plan that each and every employee will, what he will do in the entire year. Okay, so plan his activities. Then monitor his activities quarterly, 6 monthly, that really what we are expecting, that really it is getting progressed or not. And then evaluate performance, and then reward and recognition. Then you can say that if this is achieved, then you will be rewarded. Okay, so really speaking, why he is rewarded and why I am not rewarded, that is the question of everybody's mind in the organization, right? Okay, so sometimes you say, ये साला बॉस का बच्चा है, इसके लिए ब्लू आइड बॉय, इसके लिए उसको मिल रहा है ना? तो if this particular thing is there, then ये argument को थोड़ा सा कम हो जाएगा. Really, if I want to get rewarded, what I need to do, that really I will come to know. That is the benefit to the employee. Let us see benefits to the management about this performance system. That what is the benefit to the management? That systematic evaluation. Okay, sometimes what happens कि जो unsatisfied लोग रहते हैं, है ना, वो लोग बोलते हैं कि साला मेरे को मिलता नहीं है कुछ, है ना, and they go and argue with the management. Okay, so but here what happens when there is a systematic approach for everything, when there is a measurable approach of everything, management also can answer to this. Yes, no boss, तेरे से इसने अच्छा काम किया है, ये देख. Okay, तो
तू अगले साल तू अच्छा काम कर ले, तेरे को भी मिलेगा. Yes, so there is a transparency over here which can be created with systematic evaluation. The evaluation पहले सिस्टम पहले से ही मालूम है, साल शुरू होने से पहले मालूम है कि मेरे को इवेल्युएट कैसे किया जाने वाला है. Okay, so management also have some tool in their hands that they will not lose confidence of the people while rewarding somebody and for not rewarding somebody. रिवॉर्ड तो हर किसी को नहीं मिलने वाला है ना. रिवॉर्ड अवार्ड एक ही आदमी को मिलता है, पहला नंबर तो एक ही रहता है ना. ओके, सो देन यूज दिस फॉर वेरिएबल पे इंक्रीमेंट्स. ये जो परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा वो मेजरमेंट के हिसाब से इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं. वो मेजरमेंट के हिसाब से ये वेरिएबल पे जो है वेरिएबल पे भी वही हिसाब से मिलेगा. देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस नाउअडेज, दोज आर पेमेंट्स. योर सैलरी इज देयर फिक्स्ड प्लस वेरिएबल पोर्शन. वेरिएबल पोर्शन इज क्या है कि अगर कंपनी को अच्छा कुछ मिलेगा तो एम्प्लॉयज में बांट देंगे. मे बी मेनी टाइम्स, जनरली majority times it is 80-20, 80% fixed and 20% is variable pay is there. Okay, so this variable pay can be made with help of this performance evaluation. अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको वेरिएबल पे मिलेगा, आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको वेरिएबल पे नहीं मिलेगा. एंड that is legal. Okay, so there is no illegality because you are paying something over and above the remuneration which is decided, and that is why it is legal also. Okay, umbrella view of activities for the management. See, many a times it so happens कि अभी say for example payroll किसने बनाने का है, HR ने बनाने का है, accounts ने बनाने का है ना. There are some gray areas like this. Okay, exactly this activity who will do? Okay, so some activities are clear. मटेरियल आता है तो स्टोर्स में आएगा, स्टोर्स वाला मटेरियल स्टोर करेगा, ये तो क्लियर है. लेकिन पेरोल जैसे एक्टिविटी यस है तो सो अम्ब्रेला व्यू ऑफ एक्टिविटीज इज वेरी important, and one can control the activities. If you can see on the map, you can see the map and you will know where I am going and where is the sea and where is the mountain and all everything. That is how a very well umbrella view of activities is required. क्या क्या activities हो रहा है organization में, synchronization of activities and control those activities. Activities synchronized होने चाहिए, then only organization can process. परचेस वाले ने परचेस करना चाहिए टाइम पे मटेरियल आना चाहिए, तभी तो हम कुछ डिलीवर कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग. मेजॉरिटी ज़्यादा करके ये मैन्युफैक्चरिंग, और क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में से हूँ इसके लिए मैं एग्जांपल ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग की देता हूँ. एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स है इसमें कि उसको टारगेट ओरिएंटेड वर्क है ना. ये टारगेट है, मेरे को ये प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट ने दिया हुआ है या तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोगों ने, मेरे और मेरे बॉस ने मिलकर डिसाइड किया हुआ ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस भी मुझे मालूम है, और ये प्रोजेक्ट मेरे को 3 महीने में ख़त्म करना है, 4 महीने में ख़त्म करना है. उसका रिजल्ट उसके बाद 3 महीने में आने वाला है, उसके बाद मैं मॉनिटर करूँगा. ये सब जो प्रोजेक्ट्स है छोटे छोटे किधर भी होते हैं, है ना. अकाउंट्स में भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, है ना. सी वन प्रोजेक्ट वन कैन से कि मैं फाइनलाइजेशन जो अभी तक जून एंड तक मेरा चलता रहता है वो मैं अभी प्रीपोन करूँगा, मैं एंड तक मैं फाइनलाइजेशन करूँगा. इट कैन बी अ प्रोजेक्ट, उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ लगेंगे, है ना. सो दिस टारगेट इज प्री डिफाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड सो द एम्प्लॉयज़ नो कि मैं क्या करूँगा तो मेरा प्रोग्रेस होने वाला है. व्हाट द मैनेजमेंट वांट. प्री डिसाइडेड परफॉर्मेंस पैरामीटर भी प्री डिसाइडेड रहेंगे. सेल्स वाले को मालूम रहेगा मेरे को कितना बेचना है, प्रोडक्शन वाले को मालूम रहेगा मेरे को कितना प्रोडक्शन करना है, स्टोर्स वाले को मालूम रहेगा इन्वेंट्री मेरे को कितने इन्वेंट्री में मेरे को मैनेज अभी करना है, मेरे इन्वेंट्री की रिडक्शन करना है, वट एवर. Okay, so this
pre-decided performance parameters. Then growth mapping, है ना? You know what are your activities in the beginning of the year. Similarly, if you are targeting some position in the organization, okay, maybe you are working right now as assistant manager and you are targeting a position of manager taxation. You are working maybe in cost accounting or some stores accounting, and you are targeting some other position. Then you know, if I want to go to that position, then what capabilities that I need to inculcate in myself so that I can go there, I can have that portfolio. वो portfolio के लिए क्या चाहिए, ये सबको ओपन रहता है, सबको मालूम रहता है. ग्रोथ मैपिंग खुद का हम लोग कर सकते हैं, राइट? ओके. एंड प्रॉफिट में शेयर मिलता है ना? इफ द कंपनी इज डूइंग वेल, then you will be rewarded. Company is not doing well, you will not be rewarded, right? Company is doing well because of anything, because of not only because of your efforts. There are so many things. पैरामीटर्स बहुत है बिजनेस के लिए. बिजनेस के लिए कुछ भी पैरामीटर गलत हो गया तो नहीं मिलने वाला है. सो इवन इफ आई परफॉर्म गुड, market condition is not that good, so my company could not perform, they could not get profit, and because they could not get profit, I am paid less. How much less? That may be only variable pay, I may get zero to that, to the worst situation, right? Okay, so this is a share in profit. Variable pay is share in profit, and this share in profit is distributed amongst the employees on the basis of this performance that he is putting into organization, right? Then organization as a whole, उसको भी कुछ benefits है because of this performance. Limitations तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सब कुछ नहीं, everything is not measurable. Some things are there which are beyond mathematics, right? किशोर कुमार की आवाज़ अच्छी है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अच्छी है. Nobody can say that. Yes, इससे अच्छा ये है, right? That is not measurable, beyond measurement. Okay, so excellence is recognized and rewarded. Organization के लिए ये benefit है. किसी ने excellent काम किया है ना, बहुत efforts लेके कुछ कंपनी का फ़ायदा किया है ना, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत कुछ ढूंढना पड़ा है, बहुत कुछ डिगिंग करना पड़ा है ना. सो कुछ ब्रेनी एक्टिविटी है, कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाया है, इसके लिए कॉम्पिटिटर से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, कुछ भी हो सकता है. ऑल दिस एक्सेलेंस इज रियली रिकग्नाइज्ड नाउ, है ना. क्योंकि क्या है कि एम्प्लॉय खुद बोलेगा कि ये मेरा प्लान था, एक्सेलेंस अचीव करने का लिए ये प्लान था, और ये एक्सेलेंस मैंने अचीव किया हुआ है. इट विल बी डॉक्यूमेंटेड, राइट? डॉक्यूमेंटेड, एंड इट विल बी कंसिडर्ड while giving numbers to that. Let us when it is measuring, let's in next slides we will come to know, we will go through how to measure, right? Okay, then planned and structured activities and synchronized targets. टारगेट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, है ना. सेल्स वाले को बोला तुम 10-20% बढ़ा दो, प्रोडक्शन वाला का कैपेसिटी ही नहीं है 20% बढ़ाने का, तो बेचारा वो ऑर्डर्स लेके आएगा और क्या करेगा, है ना. तो ये सिंक्रोनाइज्ड भी होना चाहिए. मटेरियल वाला बोलेगा अरे हमारा सप्लाई चेन, हमारा सप्लायर नहीं दे सकता है मेरे को इतना मटेरियल, सप्लायर के पास कैपेसिटी नहीं, तो क्या तुम टर्नओवर डबल करने का सोच रहे है ना. सो दैट सिंक्रोनाइज्ड टारगेट्स ओनली विल लीड टू सक्सेस, राइट? सबका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, है ना. एंड रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम्स बेटर. कौन कौन क्या क्या कर सकता है ये भी आपको ऑन पेपर है. ऑन पेपर मैनेजमेंट को सबको मालूम है. एक बर्ड्स आई व्यू भी है मैनेजमेंट के पास, और एक रियली इन डेप्थ भी जा सकते हैं. Okay, so these are the benefits to the organization. Organization itself can process. They know quality of the people.
है ना. Somebody is better in marketing, not necessarily the other person is better in marketing. He may be better in the data management and all. Okay, so कौन सा आदमी को किधर रखने का, ये भी मैनेजमेंट को या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल ये भी अच्छा डिसीजन लेके ये रिसोर्सेस अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. किसी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि there are some other resources needed to perform a particular task, right? Computers are needed to do better accounting. SAP software is needed to do better accounting. I am doubtful, but still, okay. Okay, so this is better resource management, the best part of it. है ना. ये सब तो HR का एक्टिविटीज़ है. HR बनेगा, टॉप मैनेजमेंट बनेगा, ये वो का ये वो लोग करेंगे, है ना. तो वो लोग करेंगे तो CMA क्या करेगा, है ना. CMA इसमें क्या करेगा, है ना. डिसाइडिंग एरियाज ऑफ एक्सेलेंस, है ना. एक्सेलेंट हमको चाहिए, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, है ना. एक जस्ट क्लासिक एग्जांपल देता हूँ मैं एक कंपनी में आई वाज एम्प्लॉय ओवर देयर एंड व्हाट डिड दे डू. They were pushing hard to themselves for improvement in cycle time, production cycle time, है ना. PCT जिसको बोलते हैं, है ना. वो इंजीनियर्स का टीम लगाया था, है ना. इम्प्रूवमेंट साइकिल टाइम इम्प्रूव होना चाहिए. जो चीज़ 20 सेकंड में बनती है वो 18 सेकंड में बनाने के लिए हमको वी आर ट्राइंग टू पुश हार्ड फॉर दैट. दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ओवर देयर. ओके, बट हाउ CMA कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओवर हियर. PCT तो हम लोग कम ज़्यादा कर नहीं सकते, हम लोग इंजीनियर नहीं है ना. बट जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन वॉज दैट देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वॉज रफली 48%. 48% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एंड दे पीपल आर पुशिंग हार्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन PCT. ओके, सो मैंने उनको बोल दिया, अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है 2 सेकंड ज़्यादा लग गए तो. डज इट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर बॉटम लाइन. क्योंकि क्या करेगा, 2 सेकंड ज़्यादा जल्दी बना के क्या करेगा, तुम्हारा वर्कर आज ज़्यादा आराम करेगा. क्योंकि क्या है, अभी 48% है तो 47 आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 47% पे आ जाएगा. उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है तुमको. So don't push hard in improving PCT. Do something else. Okay, do something else. Rework नहीं ज़्यादा होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दो. या तो फिर तो आपका पेन एरिया है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग, योर कैपेसिटी ऑलरेडी 52% कैपेसिटी ऑफ योर्स इज फ्री. सो PCT के ऊपर क्यों काम कर रहे हो. सो दिस डिसाइडिंग एरियाज ऑफ एक्सेलेंस where CMA can contribute. Only CMA can say this. No any other accountant, no company secretary, no finance person, no engineer can really do this, because CMA is a person, I really believe CMA is a person who can look at both the parts of business. Finance also, at the same time operations also. पैसा तो ऑपरेशन से आता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से पैसा नहीं आता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज जस्ट ब्रिंगिंग अ मशीन. पैसा किधर से आएगा, ऑपरेटिंग द मशीन. मशीन ऑपरेट करने से पैसा आएगा, राइट. ओके, सो ऑपरेटिंग गिव्स यू मनी, ऑपरेटिंग गिव्स यू मनी एंड नॉट ओके. सो वेयर टू वर्क, ये जो PMS में डिसाइड होगा उसमें PCMA और CMA कैन कंट्रीब्यूट. CMA रियली कैन कंट्रीब्यूट. कह रहे भाई इधर काम नहीं करो, इधर काम करो तो तुमको बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट है और ये ज़्यादा आपको इफेक्टिव है. इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव बॉटम लाइन.
एक्टिविटी है, आपके ऑब्जेक्टिव से कॉमेंसुरेट कौन सा एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है या नहीं है, दैट CMA really can contribute over here, right? Evaluation of excellence, है ना? Excellence, किसी ने बोला कि मैंने excellent काम किया है, तो उसका evaluation करना चाहिए, है ना? See, एक example देता हूँ मैं इधर again, है ना? One engineer was there and he told me कि भाई मैंने अभी जो ये जो काम किया है, इससे अपना पावर कंजम्पशन बचने वाला है. पावर कंजम्पशन विल गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माई दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, माई दिस आई एडेड दिस मशीन्स एंड आई डिड दिस दैट लिस्ट ऑफ थिंग्स, ओके, लिस्ट ऑफ थिंग्स, एंड आई डिड ऑल दिस थिंग्स, एंड सो what is the benefit of it? Benefit is power consumption of the organization, of the factory will go down. Okay, fine. I buy yours this thing. Okay. लेकिन मेरे को ये पावर के बिल में दिखना चाहिए. पावर के बिल में दिखेगा क्या? मेरे को लास्ट ईयर का लास्ट मंथ का पावर का बिल दिखाओ, इस मंथ का पावर का बिल दिखाओ, तभी मैं मानूंगा. तो वॉट एवर द फिगर्स यू आर सेइंग कि मैंने 10 लाख रुपया बचाया है, लेकिन पावर कंजम्पशन में दिखता है सिर्फ 3 लाख, तो मैं 3 लाख ही लेके जाऊंगा यार. वेदर इट हैज कम डाउन टू द बॉटम लाइन, ओके, दैट हु कैन से दिस? ओके, ओनली CMA, right? Not the person who is booking electricity bill. He will not notice. He may not be able to relate these two things. वो बोलेगा ठीक है, तो 3 लाख से कम हो गया, इट्स दैट्स ऑल. वो बट CMA इज द पर्सन हु कैन रिलेट दिस टू थिंग्स कि अरे अब आप भाई इसका एक्टिविटी किया है, इसके लिए ये बिल कम हो गया है, और ये नाउ इट हैज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट this particular activity has saved cost. That is really evaluation of excellence. There CMA can contribute a lot. And all these areas are ये कैलकुलेशन सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? ये कैलकुलेशन बना के लाओ, मैं उसको वेटेड एवरेज रेट में लगा के रखता हूँ. इन्वेंट्री कंट्रोल किया, इन्वेंट्री कम किया, कम इन्वेंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं. इज इट रियलिटी? कैलकुलेशन दिखाओ, मेरे को इन्वेंट्री लेजर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऑडिट कर सकते हैं हम लोग इसका, राइट? तो ये कैलकुलेशन के लिए सपोर्ट दे सकते हैं CMA. ओके, दूसरा एक कैलकुलेशन सपोर्ट जो है ना, वो कैलकुलेशन सपोर्ट क्या है कि ये एक्सेलेंस करके इतना ये सब किसी को रिवॉर्ड देना है, किसी को इंसेंटिव का कैलकुलेशन करना है ना? सो इफ यू वांट टू हैव कैलकुलेशन ऑफ दिस इंसेंटिव, करायचं इन्सेंटिव्हचं व्हेरिएबल पेचं कॅल्क्युलेशन पर्सन वाईज कॅल्क्युलेशन करायला पाहिजे, असं की त्या पर्सनला पण चॅलेंज नाही करता आलं पाहिजे, राइट? बिकॉज इफ द पर्सन चैलेंजेस, सबको पैसा मिलने वाला है जेब में, जिसको कम मिलेगा वो चैलेंज करेगा. सो नॉन चैलेंजेबल कैलकुलेशंस ये CMA की आंसरेबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये तो HR वाला भी नहीं करेगा और ये अकाउंट्स वाला भी नहीं करेगा, राइट? ओके, दिस वाइड एरिया, वाइड आई मीन क्या बोलते हैं, अनटैप्ड एरिया है कि जो इधर CMA रियली कैन कंट्रीब्यूट एंड मेक हिज ओन पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये यूनिक है ना? दैट इज CMA's USP. Really nobody can do this, only CMA, because he has access to everything and he has understanding of everything. Whatever is happening in the organization, CMA can understand. I really believe in that. Do you all believe? Yes. Okay. So then monitoring this performance, 3 महीने के बाद कितना होना चाहिए काम, 4 महीने के बाद कितना होना चाहिए. Some you can use different techniques. Gantt chart है,
या तो फिर पोइट CPM है, ऑल दीज थिंग्स दोज आर टॉट इन आवर बुक्स, वी नो, राइट, है ना. सो हमको मालूम है, वी कैन डू दिस, राइट. सो मॉनिटरिंग डेफिनेटली वी कैन डू. बजट मॉनिटर करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट मॉनिटर करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, वो भी मॉनिटर करते हैं हम लोग. तो ये क्या चीज़ है हमारे लिए, है ना. सिर्फ कंट्रोल C कंट्रोल V तो है ना. सो मॉनिटरिंग भी हम लोग वी कैन डू बेटर, वी आर मेड फॉर दैट, राइट. ओके, देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्सेलेंस एक्टिविटीज, है ना. अरे आप कॉस्ट बचा रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसके लिए 10 आदमी लगाओ तो नहीं चलेगा, हमको नहीं परवड़ेगा, है ना. यू आर सेविंग सम कॉस्ट, बट फॉर दैट कॉस्ट इफ यू नीड सम कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन दैट कैपिटल दिस रियली जस्टिफाइबल. इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्टिफाई करता है क्या? हु कैन से दिस, राइट. हम लोग ही बोल सकते हैं ना, और कौन. CMA के सिवा कोई दिखता ही नहीं है मेरे को इधर कि जो ये बोल सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उसमें से बेनिफिट इतना आ रहा है. क्वांटिफाई द बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओनली, राइट, बिकॉज वी हैव इंटरेक्शन विथ एवरीबडी. स्टोर्स में भी हम लोग जाते हैं, शॉप फ्लोर में तो हम लोग जाते ही जाते हैं, फाइनेंस में भी हम लोग जाते हैं, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो दिस इज द CMA's role, where you really can make your place in your own organization, or if you are PCMA, you can make your place with your clients. Many clients of you may not be having this. सबके पास नहीं है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. ओके, कुछ बहुत जायंट्स के पास है, कुछ IT वालों लोगों के पास है, लेकिन मे नॉट बी ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स आर हैविंग दिस. नहीं है सबके पास. सो इट्स अ ग्रेट स्कोप फॉर अ CMA टू कन्विंस द मैनेजमेंट, एंड अपने जेब में भी थोड़ा डालने का है. ओके, अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स. ये अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स कैसे कैसे दिए जाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, है ना. तो मेजरमेंट सिस्टम में तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ना, दैट इज डन एट द रिवॉर्ड्स आर देयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल. बिकॉज इफ यू ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर जॉब एक्सेलेंट, देन of course organization will do something excellent, some excellent job subject to market conditions, right. Okay, so if organization is doing well, then profit is increased, and then this profit can be distributed among the employees, among all the employees who are working for the organization, maybe staff, maybe whatever. Then division level, some BU is performing, or different BUs are there. If in the organization there are different BUs, then if the BU is there, then डिवीजन परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगा इंसेंटिव. डिवीजन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो डिवीजन में सब लोगों को परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिलेगा. डिपार्टमेंट लेवल, कोई डिपार्टमेंट है, पूरे डिपार्टमेंट के लेवल एफर्ट्स लगते हैं. ऑडिट कंप्लीट करना है 15 दिन पहले, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भागना पड़ता है उसके पीछे, एक अकेले ने भाग के कुछ होता नहीं है. सो दिस सम इंसेंटिव्स आर देयर फॉर द डिपार्टमेंट, एंड देन इट कम्स टू इंडिविजुअल लेवल, दैट एक लेवल नीचे नीचे हम लोग आके अभी ग्रास रूट लेवल तक हम लोग पहुँचते हैं, दैट इज इंडिविजुअल लेवल, राइट. सो अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर गिवन ऑन द different levels. तो ये बनाने का कैसा है, हाउ टू डू दिस, राइट. ओके, सो कैसा बना, कैसे करेंगे ये लोग, कैसे अचीव करेंगे हम लोग, ये कैसे अचीव करेंगे. सो टेक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले लो,
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको सब कुछ मिलेगा कि डिपार्टमेंट्स क्या है, डिविजन्स क्या है, सब डिविजन्स क्या है, सब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। डिपार्टमेंट में कुछ सब डिविजन्स है क्या, दैट ऑल्सो वी नीड टू चेक। फॉर एग्जाम्पल में भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके अंडर रॉ मटेरियल क्वालिटी चेकिंग का एक अलग सब डिविजन रहेगा, और मे बी फिनिश गुड्स का क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये अलग डिवीजन रहेगा, 2 डिविजन्स रहेंगे, 3 डिवीजन, मल्टीपल डिविजन्स आर देयर, मे बी देयर इन एनी डिपार्टमेंट। फाइनेंस में भी हम लोग देखते हैं टैक्सेशन का अलग रहेगा, कॉस्टिंग का अलग रहेगा सेल, है ना, अकाउंटिंग, रूटीन अकाउंटिंग का सेल अलग रहेगा, पेएबल का अलग है, रिसीवेबल का अलग है। ये तो ये हो गए आपके हमारे सब डिविजन्स, राइट। ओके, देन एम्प्लॉय क्लास डेफिनेशन, है ना, किसको देना है ना। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट सेज कि बाबा लेवल 1 2 3 4 अप टू स्टाफ ओनली आई कैन गिव, फॉर द वर्कर्स आई विल नॉट गिव, बिकॉज फॉर वर्कर्स वी हैव डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट पैरामीटर्स उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है हमने। ओके, उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है, और वो एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग वर्कर्स के लिए जाएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम, दैट विल बी ओनली फॉर लेवल 1 2 3 4, उसके नीचे के लेवल्स के लिए हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड द स्कोप फॉर फर्स्ट फॉर whom I am doing this performance measurement. So I am just going through the how to go for the process of performance management. Organization chart ले लो, उसके सब डिवीजन ले लो, उसमें कौन कौन काम करता है ये देखो, उसके लिए एक्सेलेंस पैरामीटर डिसाइड करो कि भाई तुम्हारे काम में तुम एक्सेलेंट क्या कर सकता है। कुछ पेन एरिया है कि तुम्हारा, कैन यू आर यू हैविंग सम पेन एरिया दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज, कितना भी ट्राई करो मेरे से हो नहीं रहा है ना। सो ये गिवन सिस्टम में ये होता नहीं है, तो ये दिस इज एक्सेलेंस पैरामीटर्स, वो डिसाइड करो। दिस इज व्हाट नथिंग बट अ प्रिपेयरिंग अ budget of activities, not a budget of, and it is not having financial parameters, but this is a budget of activities, plan of activities, and this plan can be should be converted into actual performance. Okay, then ये एक्सीलेंस इसको वेटेज भी दे दो, है ना, कौन सा परफॉर्मेंस के लिए कितना वेटेज देने का है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा एक्सेलेंट एक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, उसको वेटेज दे दो, एंड देन अचीवमेंट के लेवल्स दे दो, है ना। सी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑडिट हम लोग हमारा जुलाई एंड तक चलता रहता है। ओके, सो व्हाट वी विल डिसाइड नाउ, नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट ये है हमारे डिपार्टमेंट का कि ऑडिट हम जून 30 जून के पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ये अगर टारगेट है, तो व्हाट डू आई डू, है ना। ये अगर टारगेट है जून के पहले कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो गया, जुलाई 5 तक चला, राइट। वी डिसाइडेड कि 31 जुलाई अगस्त और जुलाई अगस्त में हम लोग ऑडिट कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस साल हम लोग 30 जून के पहले कंप्लीट करेंगे, लेकिन 30 जून के तक नहीं हो गया, 5 जुलाई तारीख हो गई। सो व्हाट टू डू नाउ, ओके, so we can say that this target is 90% achieved. Okay, 90% achieved. तो 90% भी अचीव किया तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना। कुछ भी पैरामीटर्स रहेंगे, है ना, मे बी ये पीसीटी इम्प्रूवमेंट रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन बंदे ने एफर्ट्स दिया है और वो 90% तक पहुंचा है, तो हम लोग उसको 90% का अवार्ड दे देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ अचीवमेंट लेवल्स, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने 30 जून डिसाइड किया, लेकिन हमने ऐसा कुछ काम किया कि हमने 5 जून को ही ऑडिट खत्म किया। इज बेटर देन एक्सेलेंस यार, जो डिसाइडेड पैरामीटर था उससे भी अच्छा काम किया बंदे ने, तो हम लोग उसको 110% देना चाहिए।
Okay, so these are the achievement levels, and with these achievement levels you can measure कि लोगों ने अच्छा काम किया है, जितना डिसाइड किया था उससे भी अच्छा किया, तो हम लोग जितना डिसाइड किया था इंसेंटिव उससे भी अच्छा इंसेंटिव उसको दे देंगे. जो अगर एटलीस्ट 90% तक पहुंचा है तो एटलीस्ट 90% तो इंसेंटिव दे देंगे, है ना. सो दीज आर द अचीवमेंट लेवल्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर एक्सीलेंस मैट्रिक्स. ओके, लेट अस हैव अ लुक सो दैट how I can open this file. Anybody knows how I can open this? हाँ, हे फाईल ओपन, हाँ हे कसे ओपन करायचे? ठीक आहे, इकडून करू का? इथे पण आहे. येते का? कुठल्या तरी फोल्डरमध्ये सेव्ह केले होते. हां, कुठल्या तरी फोल्डरमध्ये केले असेल. हां, कुठल्या तरी फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आहे. करू काय? ते मगाशी आपण कुठल्या फोल्डरमध्ये सेव्ह पण केले आहे. फाईन फाईन फाईन.
क्या बोला? रेटिंग दूंगा. इसके पूरा पूरा अननेसेसरी बंद हो गया. एक्सेल ओपन नाही होत ते हे आणते सर पॉपअप येतं पॉपअप आला होता गेला Okay. Okay. Fine. Fine. So, here we can see this calculation part of it, right? How to do it, right? एक example छोटा सा मैं दिया हुआ है इधर, है ना? See if the department is that accounts and finance, है ना? See you can see over here accounts and finance department is there, employee code is 1006 and employee name is SNH. Okay, then who is that SNH? Is management is a manager accounts and finance. Okay, so this HNS is a manager accounts of finance. उसका level है 1.1 L1 sorry, उसका level है 1. So he is the person who is in charge of finance department. Okay, so reporting manager है उसका कोई RK करके है. Then PMS target उसको क्या क्या मिलेगा, है ना? सो मे बी कंपनी लेवल का एक टारगेट है कि जो अक्रॉस द कंपनी सबके लिए है. ओके, वो क्या है? तो 20% ऑफ सेल्स वैल्यू, 20% ऑफ दिस, ये जो इंसेंटिव का टोटल अगर 100% उसको इंसेंटिव मिलेगा तो उसमें से 20% इंसेंटिव ही विल गेट बिकॉज ऑफ अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट. सेल्स टारगेट अगर कंपनी ने अचीव किया तो उसको आउट ऑफ टोटल, उसका अगर टोटल उसका इंसेंटिव 100 रुपये आता है तो उसका 20% 20 रुपीज़ उसका वैलिडेशन रहेगा कि अगर सेल्स अचीव किया तो. सेल्स अगर 90% अचीव किया तो उसको 18% मिलने वाला है. सेल्स अगर 120% अचीव किया तो उसको 20.2% whatever also सब कुछ वो ऐसा मिलेगा. सो 20% वेटेज इज गिवन, वेटेज दिस इज वेटेज, 20% weightage is given for company performance of sales target, right? Okay, then value rupees in lakhs equal to target अगर किया तो 10% basic, 10% of the basic मिलेगा. then minimum 6% of basic और maximum 12% of basic, है ना? मिनिमम 90% तो करना चाहिए तो 6% मिलेगा. मैक्सिमम उसको कितना भी, उसको सीलिंग भी रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा किया तो फिर भी हम लोग इतना आपको मैक्सिमम आपको इतना देंगे. सो मैक्सिमम इज 12% ऑफ द बेसिक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? सो दिस इज अ नथिंग बट इज अ मैथमेटिकल मॉडल of this performance and evaluation of the performance, right? It's a mathematical model. So दूसरा टारगेट उसको क्या दिया है? तो दूसरा टारगेट है that is also a company level target,
दैट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी आप बढ़ाओ ओवरऑल कंपनी में, तो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। परचेस वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा, सेल्स वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग का एफिशिएंसी बढ़ेगा। परचेस वाले ने राइट टाइम मटेरियल लाया तो manufacturing efficiency will grow, will increase, and so everybody is contributing in manufacturing efficiency. And so manufacturing efficiency, if we do meet the target of improvement in manufacturing efficiency, everybody across the organization will get this incentive, irrespective of his direct contribution is there or not. Even accounts person also will get this incentive. Okay, that is because it is a company level parameter. The another parameter is then, the third is ERP implementation. That may be the pain area of that organization कि बहुत साल हो गए साले ERP हम लोग implement ही कर नहीं पाते। So पूरा कुछ efforts डाल के, focused efforts डाल के हमको ERP कुछ भी करके इस साल में हमको ERP implement करना है। तो ERP implementation, that is also a company level effort. अकेला अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी बंदा नहीं कर सकता है। ओके, तो सबका एफर्ट्स उसमें लगेगा, सबका कोऑर्डिनेशन लगेगा, सबका एक दूसरे के साथ अच्छा डायलॉग लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगा, तभी ये ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ओके, सो ये जो तीन जो है पहले वो कंपनी लेवल के पैरामीटर्स है। द कंपनी वांट्स टू अचीव these three things in this year, that is at strategic level, right? The fourth parameter is of departmental level. See, this 20, 20 and 10%, 50% of it is maybe for company level. We can change the percentage, of course, this is only for calculation sake, it is there. Okay, so 30% of the parameters will be departmental parameters. So what is the departmental parameter for accounts department? Is monthly closing and reporting should be in time. ओके, कभी कभी कुछ कंपनी में ऐसा होता है 15 तारीख तक MIS आता ही नहीं है, 20 तारीख तक MIS आता है, उसके वो MIS का कुछ यूज ही नहीं होता है। ओके, सो व्हाट इज द टारगेट नाउ? दैट माय MIS, द अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट्स MIS शुड गो टू द मैनेजमेंट बिफोर 5th, देन ओनली मैनेजमेंट कैन डू समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। ओके, सो दैट इज द टारगेट, दैट इज द पेन एरिया। अगर ये 30% incentive amount is assigned, incentive weightage is assigned to that particular parameter. So अब ये measure कैसे करेंगे ये particular parameter? So in number of months, 12 महीने में आपने कितने बार 5 तारीख के अंदर दिया है? 8 महीने दिया तो 10 महीने दिया तो इतना परसेंट, 8 महीने दिया तो 66%, whatever, 9 महीने दिया तो 75%. So this has now become measurable. Okay, now it is on the accounts department efforts that whether entire department will get this particular incentive. Okay, if everybody is putting efforts, है ना, रात को काम करो, सुबह काम करो, कभी भी काम करो, घर जाके काम करो, लेकिन ये 5 तारीख के अंदर हमको गुड क्वालिटी MIS हमको देना है। Okay, so that is the first thing, or that is the thing where I can start with as accounts department. Okay, तो ये अगर अचीव किया तो accounts department में काम करने वाले हर बंदे को मिलेगा, right? Okay, and then it comes to individual parameter, that particularly this fellow has taken one task, that reconciliation of GST customer advances. Customer ने अगर एडवांस दिया तो उसका बिल होने के बाद वो एडवांस का हमने क्रेडिट लिया क्या GST में, है ना? तो ये टाइप का रिकन्सिलिएशन ये मैं बना दूंगा, ये टारगेट उसने खुद का लिए इंडिविजुअल बेसिस पे लिया तो उसका ये टारगेट हो गया इंडिविजुअल, राइट? ओके, सो द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग टू हिम, उसके नीचे है कि जो ये पर्सन जो है ये RNT इज रिपोर्टिंग टू SNH, है ना? SNH इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये जो बंदा है वो सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट है। वो सीनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए टारगेट क्या रहेगा? जैसे हमने पहले 3 देखे, ऑल द फर्स्ट 3 आर कंपनी लेवल टारगेट्स, दोज आर विच आर एप्लीकेबल टू
एवरीबडी, अगर कंपनी अचीव करेंगे तो कंपनी में काम करने वाले सबको मिलेंगे। अप टू डिपार्टमेंटल लेवल ये दो बंदों का टारगेट लेवल सेम रहने वाला है। ओके, सिर्फ चेंज इज वेयर, चेंज इज ओनली इन इंडिविजुअल पैरामीटर। ओके, तो इंडिविजुअल पैरामीटर को ये इसको सेम मिलेगा, है ना। तो सेम पैसा मिलेगा क्या दोनों को? तो ऐसा नहीं, ओके, सेम पैसा नहीं मिलेगा। उनका वेरिएबल पे विल डिपेंड ऑन देयर ओन सैलरी। सैलरी में अगर जितना है, जिसका ज़्यादा सैलरी है उसको सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव मिलने वाला है, राइट। दैट मीन्स जो सीनियर है जिसका एफर्ट ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जूनियर है उसका कम है तो उसको कम मिलेगा, बिकॉज दैट इज लिंक्ड टू एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। 100% मीन्स नॉट 100% सैलरी, 100% इज अगर 20% इंसेंटिव है तो 100% मीन्स 20% ऑफ द सैलरी, दैट इज 100%। सो ये अगर अचीव किया है, ये 3 कॉलम देखिए आप, है ना, कि बेस लाइन क्या है तो 10% ऑफ बेसिक इक्वल टू टारगेट, टारगेट मीट किया तो 10% ऑफ इंसेंटिव मिलेगा, 10% ऑफ बेसिक मिलेगा, मिनिमम 6%, 10% लेस देन द टारगेट। टारगेट आपको 100 रुपये का सेल बढ़ा, 100% सेल बढ़ाने का दिया है। इफ़ 90% अचीव किया तो आपको 6% तो मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, 6% आपको मिल जाएगा। और एक्सेलेंट अचीव किया तो आपको मैक्सिमम कैप इज देयर, दैट 12% मिलेगा, है ना, क्योंकि क्या है मैक्सिमम कैप भी रखना चाहिए, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्कशीट विल लुक लाइक, दिस इज हाउ द अप्रोच इज देयर, दैट हाउ इट इज मेजरेबल and how it is rewarded, and definitely now you can see that this particular worksheet कौन बना सकता है? again and again I am coming to the same point कि ये इतना जो calculations है, we are calculation masters, we are mathematicians, right? Okay, so ये इतना understanding, convincing and correct, accurate, है ना, because why these things, three things are required, because कोई भी अगर झगड़ा करने आएगा तो सीधा CMA के पास भेजने वाले हैं, है ना, इसने बनाया तो तो हमको ये पूरा केयरफुली बनाने का है। ओके, सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट नाउ, एक्सेल। So this is now you can relate this organizational level, then division level, then department level and individual level with that Excel sheet that just we just studied. Okay, individual level के लिए क्या रहेगा, तो ऐसे different levels रहेंगे and then different awards रहेंगे for achievement of everything. Okay, so team का see this the beauty of this particular system is it's not only individuals performance is tracked, it is the department performance is also tracked, that is also rewarded, a team is also rewarded, if some cross functional team है तो entire organization अगर benefit करता है, market अच्छा है, खूब बहुत अच्छा धंधा हो गया, business हो गया, profit बहुत मिल गया है तो distribute कर लो, no problem, हमको हम लोग we can afford to give better salary, so I am paying better salary this year, next year उससे भी अच्छा है maybe may not be. ओके, सो अगर टारगेट अचीव किया है तो हम लोग इतना दे देंगे. ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट, है ना.
देन हाउ मच टू पे, कितना देने का है, वेरिएबल पे देना है हमको, वेरिएबल पे कितना देने का है, किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, तो एम्प्लॉयज़ के सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, क्योंकि वेरिएबल पे विल बी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ओनली. ओके, देन सैलरी कॉम्पोनेंट्स दैट वी नीड टू डिसाइड कि सैलरी में बहुत सारा कुछ होता है. CTC वाला तो अलग है, कुछ कैश रिवॉर्ड्स है वो भी इंक्लूड करने का नहीं करने का. सो यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट कि कौन से बेसिक DA, HRA और कुछ अलाउंसेस एंड ऑल अदर अलाउंसेस, ओनली दैट विल बी कॉल्ड एज अ CTC फॉर द पर्पज ऑफ दिस वन. सो डिफाइन करो कि कौन से ऊपर, मैं कोई डिफाइन करेगा, मैं सिर्फ बेसिक प्लस DA प्लस पे के ऊपर दे दूंगा, अप टू दिस वन बेसिक DA HRA, है ना. देन परसेंटेज डिसाइड करो कि इसके सैलरी के मैक्सिमम, सो दैट द मैनेजमेंट आल्सो विल नो कि मैक्सिमम मेरे को कितना बम्बू लगेगा इसमें. ओके, मैक्सिमम मेरे को कितना पैसे का अरेंजमेंट करना है. ओके, सो पूरा अचीव नहीं होगा, पूरा अचीव होगा, ज़्यादा भी हो सकता है ना. तो हर एक लेवल पे ज़्यादा अचीव नहीं होने वाला है. सो कितना मेरे को मैक्सिमम देना है, दैट मैनेजमेंट विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर पेइंग दिस, बिकॉज दिस इज अ एनुअल पेमेंट, राइट. ओके, सो अदर पैरामीटर्स इसमें लगा सकते हैं आप लोग, है ना, कि जो आदमी 3 महीने में ज्वाइन हो गया है, उसका क्या लास्ट 3 मंथ्स उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा कंपनी में, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला भाई. 2 महीने, 1 महीना अभी आया था, अभी सीख रहा है, तो वो अभी से कंट्रीब्यूट क्या करेगा. सो उसको नहीं मिलने वाला है. जिसको 1 साल कम से कम हो गया है उसको मिलेगा. दैट पैरामीटर वी कैन पुट इन एज अ ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट, है ना. प्रोजेक्ट आधा छोड़ के बीच में चला गया है, उसको क्यों देने का, है ना. तो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये पैरामीटर्स आप लगा सकते हैं, है ना. See, one of my clients had a very funny parameter. Okay, so they said that जो बंदा 1 जनवरी को भी एम्प्लॉयमेंट में था और 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर में भी एम्प्लॉयमेंट में था, उसी को मिलेगा. मीन्स यू हैव टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटायर ईयर. दैट वाज द इंटेंशन एक्चुअली. बट फनी थिंग इज, एक बंदे ने मार्च में कंपनी छोड़ दिया और नवंबर में रीज्वाइन कर दिया. Ticket number got changed, but see what happened, that he said, I am claiming this now. I was there as per your criteria, I was there on the 1st January, I am there on the 31st December. So then the wording was changed. Okay, and entire year you should be there in the employment with the company. That is the criteria. Okay, so we need to be very careful while designing this, because it is क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी लोग लॉयर के जैसा सोचते हैं, है ना. ये पूरा ये वर्ड ऐसा है. Okay, so this is exceptional. See, the company was having roughly 1600 employees, and out of that, one employee in one particular year did this. So it is an exception. So, but this is some look at it as a fun and enjoy. Okay, so ऐसा भी हो सकता है. So आपको थोड़ा पॉलिसी थोड़ा ड्राफ्ट करना है carefully. Okay, so other parameters you can do. See why this particular parameter was you can use it for, like a management or organization can use this. Okay, how you can use this, that अगर आपको बीच में छोड़ने वाला है ना, तो 20% का तो नुकसान होगा सना. You are getting my point. Okay, so this attrition has now reduced, right? छोड़ के जाने वाले लोग है ना, that was reduced. क्योंकि क्या है, जो बंदा नवंबर में छोड़ के जाने वाला है वो सोचेगा साला नहीं मैं दिसंबर तक रहूँगा, उसके बाद में ये इंसेंटिव तो मिलने दो मेरे को, उसके बाद में मैं छोड़ूंगा. Right? Okay. So that is the, here this particular criterion and all this variable pay, all these you can use for addressing your own pain areas.
राइट कि अब बहुत एट्रिशन है तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि जो आदमी ने क्या सोचना है ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना चाहिए. Okay, so this is how one can say. Okay, so other parameters are joining date, leaving date, ऐसा कुछ है. अगर कुछ है attendance, some companies may be having problem of attendance कि लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन पूरा महीना भर अटेंड ही नहीं करते हैं विदाउट सैलरी, उनका पेमेंट ये वो बहुत सारे रहते हैं. Okay, so you can put attendance parameter over here. Some companies people don't come to the company at right time. So वो 9 बजे कंपनी चालू होती है या आराम से 10 बजे 11 बजे आ जाते हैं कंपनी में. So you can put over the parameter over there that जो आदमी at least 90% times 9 9:15 बजे के पहले आएगा उसी को मिलेगा. You can kill your pain areas of discipline over like this, है ना. डिसिप्लिन नहीं है, disciplinary pain areas you can use this data, you can use this for killing your pain area, disciplinary area, है ना. कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है. एम्प्लॉय रिटेंशन, जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय रिटेन हो जाते हैं, है ना. जाते नहीं है ज़्यादा करके, एट्रिशन कम हो जाता है बिकॉज द पीपल डू थिंक ये मेरा साल कंप्लीट होने दो, ये साल का इंसेंटिव मैं जेब में डालूंगा, उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा. ओके, सो दिस इज हाउ one can manage. Participation profit and in value generation, है ना. पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में मेरा पार्टिसिपेशन है, ये खुद को बंदे को बहुत अच्छा लगता है यार. हर एक एम्प्लॉय को ये फीलिंग बहुत अच्छा लगता है, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द कंपनीज प्रॉफिट. ओके, सो ये और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, उसको उसका शेयर भी मिल रहा है ना. राइट, सो दिल लगा के काम करता है भाई, है ना. सो आई मीन करना चाहिए अगर ये सिस्टम वर्क करेगा तो. ओके, देन वैल्यू जनरेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिसका प्रॉफिट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है. सी फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया तो प्रॉफिट में आपको डायरेक्ट मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बट स्टिल द वैल्यू इज देयर, वैल्यू बहुत अच्छा है. राइट, ईआरपी अच्छे से यूज़ किया है तो उसका कंपनी का वैल्यू भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन सिस्टम अच्छे रहेंगे, यू विल बी एबल टू डिलीवर गुड इन ऑल दिस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बट दोज आर नॉट contributing towards profit directly. That also employees you can get it done from the employees. Okay, attempt to measure quantitative and qualitative activities, है ना. qualitative activities भी measure कर सकते हैं with this model. Okay, and then employees में भी high moral, ownership आणि better teamwork. सबने मिलके अभी ये अचीव करना है, डिपार्टमेंट ने अचीव करना है, कंपनी ने अचीव करना है. तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टीम वर्क. अगर ये टीम वर्क रहेगा तो ये कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. या ऐसा ये है. इधर आई थिंक यू कैन रियली एडवाइज टू योर क्लाइंट्स. इफ यू आर a PCMA, you can advise your employer and you really can make a place of yourself, right, having this particular tool. Okay, and this is your USP. CMA's USP. CMA will work closely with HR. HR will not understand, HR will not be able to really calculate all these things because HR people are not that much strong as we are in calculations, right? Okay, they are stronger in the other cases, है ना. कोई कंपनी में दारू पे क्या आएगा तो उसको पनिशमेंट दे सकते वो लोग, that we cannot do, but calculation part हम सबसे अच्छे हैं. Okay, so really you can have this contribution, you can really make your own place by using this particular tool. Okay, so thank you very much for listening. Thank you very much to the chapter. And so
Session was very interesting and wonderful. I would like to say thank you, Mr. Ajay Solankar sir, uh, sorry, Ajay Parlikar sir. Uh, uh, Here we are cost accountant. Every time we don't see just cost and make a decisions. Every time we do cost benefit analysis, and that part sir has explained very well. I would like to add one thing, that one incident what happened, that TDS was calculated instead of 1%, TDS was calculated at 2%. So there was not heavy means compliance was saying that 1%, 2% TDS, sorry, 1% TDS at least you have to deduct, and accountant was deducted 2%. So because of increased 1%, the cash flow impact we miss out. So as a cost accountant, we see that if we deduct only 1% and save the 1%, we can use that amount in business and make more profit. So the multiplication, that part, that thinking will be come in mind because of just we are studying in studied cost accountancy. So we didn't see like horses in straight way. We always focus our wider way. So sir has opened up very our minds very well. So going forward, we will try to apply these things in everywhere. So once again, I would like to thank you to Ajay Parikar sir, and here I am declaring that session is over. Thank you. Yes.